We are doing the concept of maxima and minima of functions of two variables. So today I will be discussing some more concepts. For example, how do we find maxima, minima of a continuous function when it is defined on a closed and bounded interval? So let us start. The first important concept of the day is extreme value theorem and how to use it. So first I will give you a illustration of how to do this for a function of one variable. So अगर आप देखें कि अगर मेरा कोई continuous function है, ठीक है, if fx is a continuous function on a closed and bounded interval. Closed and bounded interval का मतलब ये होता है कि जो मेरा interval है वो इस फॉर्म का होगा. So I will be going from a to b, where a and b are some finite numbers, real numbers, and both will be included. So all the elements or all the real numbers from a to b are included in the domain of the function. Okay, so if you look at a definition of a continuous function, क्या होता है continuous function? Continuous function का मतलब होता है कि हम जा रहे हैं, ग्राफ को बना रहे हैं बिना किसी ब्रेक के. So suppose मैंने a पे स्टार्ट किया and my function is nicely going and something like this happens. Okay, so आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसके मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है? अगर आप इसके लोकल का मतलब क्या होता है? जो इंटरवल के अंदर है. सो अंदर वाले देखिए, लोकल मिनिमा, ठीक है. These pink crosses are local minima. Now let us look at these yellow crosses. लोकल मैक्सिमा, आप सब लोग ध्यान से देख रहे हैं. तो ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है वो टर्निंग पॉइंट्स पे हो रहे हैं, स्टेशनरी वैल्यूज पे, जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है. अब लेकिन आप इसके एंड पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए. ये जो इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है. तो अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू एफ ए पे पता है, ठीक है, और मुझे फंक्शन की वैल्यू बी पे पता है, और मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स पे पता है, तो अगर मैंने ये वैल्यूज कंपेयर कर ली, है ना, स्टेशनरी वैल्यूज पे फंक्शन का जो भी नेचर है या वैल्यू है, और एंड पॉइंट्स पे, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा. तो आप नोटिस करिए, ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमा बन गया और ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन गया. तो बाय चांस हमने फंक्शन ऐसा ड्रॉ करा जहां पे इंटीरियर पॉइंट्स पे ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आ गया. ठीक है. अब एक और ग्राफ बना के देखते हैं. फॉर एग्जांपल, नाउ माय फंक्शन इज लाइक दिस. दिस इज माय a, दिस इज माय b. माय फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम a, it goes like this, and then at b, it something is like this. Okay, so you notice what is happening at this particular point a. So at this particular point a, this is my value of fa, this is my absolute maximum, and at this particular point this is my value b, that is absolute minimum. तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं that if we have a function, a continuous function defined on a closed and bounded interval, it attains its bounds. Attains its bounds का मतलब होता है there is a maximum value, there is a minimum value, और function वो value ले रहा है. That means here the absolute maxima was taken at this particular point, here the absolute minima was taken at this particular point, here the absolute maxima is at this point, absolute minima at the point b. So that means there exists. Okay, so that is now the concept of extreme value theorem. So what is extreme value theorem? Extreme values का मतलब होता है maximum and minimum. So if we look at a function of several variables, but remember that the function has to be continuous. So if f is continuous over a closed and bounded set, the set has to be closed and bounded. Okay, whether the set is an R, if it is an R, it is a closed interval, or it is an R2, or it is an R3, or Rn, and so on. This concept can be extended to n variables. So suppose f is a continuous function over a closed and bounded set, then f attains its bounds. What does it mean? It means that if small m is minima of f, capital M is maxima of f, then there exists, okay, C comma D in the domain of f such that fc is equal to small m and fd is equal to capital M. That means the function will attain its maximum and minimum value on that closed and bounded set. And remember that this extreme value theorem is only valid for continuous functions over closed and bounded sets. So two assumptions: function should be continuous. Second assumption, the set has to be closed and bounded with set, the domain of the function. So this is extreme value theorem. Okay, now how are we going to use it? So we have already seen the necessary first order condition. So we have already seen that, if f is a function of two variables, okay, then we must have, dz equals to 0, and this implied that the partial derivative with respect to x should be 0 and the partial derivative with respect to y should be 0. So similarly, if z is a function of several variables, x1, x2 till xn, so there are n variables. So if you talk about the derivative of z, it has to be, f1 prime, and then dx1, and then f2 prime dx2, and then f3 prime dx3 till fn prime dxn. So what is f1 prime?
So del f by del x1. What is f2 prime? Del f by del x2. So for maxima minima, we must have turning values at on the interior points of the set. So we have done topology also. So इंटीरियर पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए था? ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होंगे. टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है. So dz is zero. So this is possible if and only if all the first order partial derivatives are zero. So this is the necessary first order condition to find out local maxima and minima. तो हमने कर लिया है कि अगर मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसके लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा मुझे कहाँ मिलेंगे? इंटीरियर पॉइंट्स पे. इंटीरियर पॉइंट्स वो कौन से इंटीरियर पॉइंट्स होंगे? स्टेशनरी पॉइंट्स. स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे पता चलते हैं? सेट ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो. और हमें बाउंड्री पे चेक करना है और फिर कंपेयर करना है. सो लेट अस सी this thing through an example. Okay, so let us look at this example. Find the extreme points and extreme values of fxy defined over a set S where fx is this. So your function of two variables is this. And it is defined over S xy such that x square plus y square less than or equal to 1. ये इसकी डोमेन है. ठीक है, तो पहले जरा डोमेन ड्रॉ करके देखते हैं. अगर आपको याद हो, so x square plus y square less than or equal to a square is a circle or is a circular disc centered at 0, 0 with radius a. So here, what is my set S? So my set S is x square plus y square less than or equal to 1 square. So center of the circular disc is 0, 0, radius is 1. So let us make, I have a circle centered at 0, 0. So this is my domain. और इसकी बाउंड्री क्या है? हमें बाउंड्री में ज्यादा इंटरेस्ट है. So what is the boundary? So boundary is the circle x square plus y square equals to 1. बस ये बात याद रखना. ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका मैक्सिमा मिनिमा. तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए? 0, fy 0. So what is the partial derivative with respect to x? 2x. What is the partial derivative with respect to y? 2y plus 1. सॉल्व करिए साइमल्टेनियसली. x equals to 0, y equals to minus half. तो एक मेरा पॉइंट आया 0 माइनस हाफ. तो यहाँ कहीं होगा 0 और ये रहा माइनस हाफ. दिस इज माय पॉइंट. सो ये इंटीरियर पॉइंट आ चुका है. ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. 0 माइनस हाफ पे इट इज 0 स्क्वायर प्लस माइनस हाफ स्क्वायर प्लस माइनस हाफ माइनस 1. यहाँ पे 0 और माइनस 1 रख देते हैं फंक्शन में. ठीक है, सो दिस इज 1/4 minus 1/2 minus 1. So 4 in the denominator, 1 minus 2 minus 4. So this is minus 5/4, which is minus 1.25. So this is the value of this particular function at the interior point. Now let us look at what happens at the boundary. अब बाउंड्री पे क्या होता है चलिए ये देखते हैं. So what is happening at the boundary? बाउंड्री पे x square plus y square 1 है. So बाउंड्री पे देखते हैं. अच्छा, पहली बात हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. सो याद रखिए जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सब कंटिन्यूअस होते हैं. सो ये जो फंक्शन है x square y square y minus 1, this is a polynomial in x and y. The degree in x is 2, the degree in y is 2. So this is a continuous function and obviously this is a closed and bounded function as you can see. We have done this in topology. So ये एक closed and bounded है. क्यों? क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है ना वो इंक्लूडेड है सेट में. ठीक है, सो जिस भी सेट में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोज सेट. ठीक है, अच्छा तो अभी ये हमारी बाउंड्री है. तो जरा फंक्शन को देखते हैं बाउंड्री पे क्या होगा. सो ऑन द बाउंड्री योर फंक्शन इज x square plus y square is 1 plus y minus 1. So on the boundary your function actually becomes a function of y which is y. Okay, so अगर आप नोटिस करें कि x square plus y square less than or equal to 1 है तो मेरी जो x की रेंज है वो -1 से 1 पर है और y की रेंज भी -1 से 1 पर है. ठीक है, सो यानी कि जो मेरा fxy का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा that will be 1 because it is taking the value of y. और जो मेरा fxy का मिनिमम वैल्यू होगा बाउंड्री पे that will be -1. ठीक है, तो अब बाउंड्री पॉइंट्स पे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं 1 -1 और ये था मेरा -1.5. तो अगर आप नोटिस करें तो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज नथिंग बट 1 at at y equals to 1. दैट मीन्स अगर x square plus y square 1 है तो कितने पॉइंट्स पे मेरा मैक्सिमा आ रहा है? 0, 1. ठीक है, बिकॉज x को 0 होना पड़ेगा अगर y 1 है तो. और अगर आप एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमा में -1 से छोटा -1 to 1.5 है. सो एब्सोल्यूट मिनिमा इज -1.25 at 0 minus half. So it is very, very easy to calculate maxima and minima of a continuous function over a closed and bounded set. So what is the method? You first go for these stationary points by putting all the partial derivatives equal to 0. And after that, you look at the boundary and observe what is happening on the boundary. Okay. All right. Now, let us look at one more example. In one study of quantities X and Y of natural gas that continental Europe should import from Norway and Siberia, respectively, it was assumed that the benefits were given by this function.
The term minus 6x plus y square arises because the world price of natural gas rises as more is imported in total. Because of the capacity constraints, x and y must satisfy this and this. Finally, for political reasons, it was felt that imports from Norway should not provide too small a fraction of total imports, so that this is equal to this or this is equal to this. So thus the optimization problem is this. तो चलिए अब मेरे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ चुकी है 2 वेरिएबल्स में, और मेरे को देखना है कि जो ये सेट है ये बाउंडेड है कि नहीं है. तो सबसे पहले लेट अस लुक एट दिस फंक्शन. दिस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन. व्हाई? बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई. कंटीन्यूअस फंक्शन है. ये देखिए, ये बनाते हैं, ठीक है. सो 0 और 5 के बीच में आपका x है, दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड है. 0 और 3 के बीच में आपका y है, ये भी इंक्लूडेड है. और ये मेरी लाइन है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2. तो जरा इस लाइन को बना लेते हैं पहले, ठीक है. सो दिस इज माई x एंड दिस इज माई y. So if I put x equals to 0, I get y equals to 1. If I then put x equals to, for example, 2, I get y equals to 2. Okay. So x0, y1. So this is my situation. And then x2, y2. So suppose x is 2, y is 2. This is my situation. Okay. So my line should be going like this. Okay. And now I have to see the inequality minus x plus 2y less than or equal to 2. तो इस लाइन के नीचे किसी पॉइंट को ले लेते हैं. लेट्स टेक 0 0. देखते हैं वो लाई करता है कि नहीं करता है. माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स 0 लेस और इक्वल टू 2. 0 लेस और इक्वल टू ट्रू. तो इस लाइन के नीचे शेड करना है. तो मैं फीजिबल रीजन पहले शेड कर रही हूँ. तो देखिए, तो मुझे x 5 से पहले पहले रहना है और 3 से मुझे नीचे रहना है. तो 3 से मुझे नीचे रहना है, तो ये रही मेरी 3 वाली लाइन, ठीक है. तो अब नोटिस करिए, मुझे इससे इस लाइन से नीचे रहना है, इस लाइन से नीचे रहना है, इस लाइन के राइट पे रहना है. मुझे ये भी पता है कि मेरा x 0 से नीचे नहीं जा सकता और y भी 0 से नीचे नहीं जा सकता. अगर मैं अपने फिजिबल रीजन की बात करूं तो ये मेरा फिजिबल रीजन आ चुका है, ठीक है. तो अब मेरा डोमेन मैंने ड्रॉ कर लिया. जरा देखते हैं डोमेन को अच्छे से, क्या बनी मेरी डोमेन. So my domain is this line, this line, this line and this line. Wonderful. Okay. So आप खुद देख लीजिए जो मेरी डोमेन बनी है. ये जो मेरी डोमेन है ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बना है. ये जो सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड है. क्यों? क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू के साइन हर जगह लगे. तो कोई भी सेट जब अपनी बाउंड्री पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट्स दोनों को इंक्लूड करता है तो उसको क्लोज सेट बोलते हैं. ये बाउंडेड इसलिए क्योंकि मैं इस सेट के बाहर नहीं जा सकती. दैट इज व्हाई दिस इज अ बाउंडेड सेट. So now I have seen that my function is a continuous function on a closed and bounded set. So therefore I can find out the maxima and minima by using the extreme value theorem for a function of several variables. और यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही variables है. तो पहले तो इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है. So let me just try to create some space. Okay. अच्छा, तो अभी पहले इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं. तो स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y दोनों 0. Now what is the partial derivative of x with respect to x? That is 9 minus 12 x plus y. And what is the first derivative with respect to y? That is 8 minus 12 x plus y. So I want both of them to be 0. So I want x plus ये दोनों 0 है. So I want x plus y to be 9 by 12 and I want x plus y to be 8 by 12. So these are not possible situation because ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल लाइंस बन गई. आप देखिए x plus y और x plus y दोनों एक 9 by 12 है, एक 8 by 12 है. That is not possible simultaneously. So that means there are no stationary points. इसका क्या मतलब है? इट मींस मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर ऑन बाउंड्री ओनली. सिर्फ बाउंड्री पे ही हमारा मैक्सिमा और मिनिमा आने वाला है. तो अब हमें बाउंड्री ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. अब बाउंड्री भी तो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी, ठीक है. तो लेट अस ऑब्जर्व द बाउंड्री. नाउ हम नोटिस कर चुके हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं दे रहा है. तो आई विल जस्ट लुक एट द बाउंड्रीज. सो लेट अस गो वन बाय वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर बाउंड्री. ये जो मेरी बाउंड्री है इसको बोलते हैं बाउंड्री 1. बाउंड्री 1 जो है ये इक्वेशन किस चीज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू 0. ये x एक्सिस है, ठीक है. तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या बन गया? व्हाट वाज माय फंक्शन? माय फंक्शन वाज 9x plus 8y minus 6x plus y का होल स्क्वायर. So now you put x equals to 0. So you will get, so you put y equals to 0. So if y is equal to 0, you will be getting 9x minus 6x square. So actually you will be getting a function for one variable, that is 9x minus 6x square, and your interval will be 0, 5.
Okay, and now let us see. So your f dash x should be 0 when 9 is equal to 12x. So x is equal to 3 by 4. And your f double dash x, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, दैट विल बी -12 बिकॉज आपका जो f dash x है वो आया था 9 minus 12x, so which is negative. So we have a maxima at x equals to 3 by 4. So f 3 by 4 comma 0 should be 9 into 3 by 4 minus 6 into 3 by 4 का square. So that is 27 by 4 minus 6 into 9 by 16. So 3 3s are 3 8s are. So 27 by 4 minus 27 by 8 is equal to 27 by 8. तो मेरी जो बाउंड्री 1 पे जो वैल्यू आई है वो 27 by 8 आई है. ठीक है, अब अगर मैं बाउंड्री 2 की बात करूं, ये मेरी बाउंड्री 2 है, तो मेरी बाउंड्री 2 पे क्या हो रहा है? मेरी बाउंड्री 2 की जो इक्वेशन है वो है लाइन x इक्वल्स टू 5. इफ यू लुक एट द लाइन x इक्वल्स टू 5, और मेरे जो y के बाउंड है वो है 0 से लेकर 3. आप नोटिस करिए ये जो बाउंड्री है ये y गोइंग फ्रॉम 0 टू 3 जा रही है, और इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5. सो जो मेरा x f ऑफ xy बनेगा वो बनेगा, इफ यू सी दैट हैज टू बी x इक्वल्स टू 5. सो f5 कॉमा y. सो 9 into 5 45 plus 8y minus 6 and what is my x 5 plus y का होल स्क्वायर. सो मेरा एक्चुअली एक फंक्शन ऑफ y बन गया which is 45 plus 8y minus 6 5 plus y का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं दैट विल बी 8 minus 12 5 plus y, और अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूं दैट विल बी -12 which will be negative. So I should be getting a maxima at 8 equals to 12 5 plus y. So 8 upon 12 equals to 5 plus y. Okay, and so if you look at this thing, my y should be 8 by 12 minus 5. So my y should be equal to 12. 8 minus 30. My y should be minus 22 by 12. तो माइनस 22 बाई 12 y की वो वैल्यू है जहां पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा, और y की वैल्यू तो 0 से लेकर 3 है. सो प्रॉब्लम है, दैट मीन्स बाउंड्री 2 पे मुझे कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिलेगा. बाउंड्री 2 पे ना मुझे कोई मैक्सिमा मिलेगा ना मुझे कोई मिनिमा मिलेगा, और हम लोग देख चुके हैं कि बाउंड्री 1 पे मुझे एक मैक्सिमा मिला था जिसका वैल्यू था 27 बाई 8. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू अनदर बाउंड्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्मॉल बाउंड्री. लेट मी कॉल दिस एज बाउंड्री 3. सो बाउंड्री 3 पे y का वैल्यू 3 है, ये मेरी इक्वेशन है, और जब y 3 होगा तो मेरी लाइन जो थी, सो वी हैव टू लुक एट द लाइन दैट वी वर हैविंग. माय लाइन वाज this minus x plus 2y equals to 2. So the point over here you can look at the graph, that is 4 comma 3 to 5 comma 3. So my x will be varying from 4 to 5. Okay, so my x will be varying from 4 to 5. ये रहा मेरा पॉइंट और ये रहा मेरा पॉइंट. ठीक है, दिस इज 4 comma 3, दिस इज 5 comma 3. तो y को 3 रखते हैं, तो व्हाट वाज योर fxy? सो योर fxy वाज 9x plus 8y minus 6x plus y whole square. So your y was 3, so your it becomes a function of x alone now. So 9x plus 24 minus 6x plus 3 का whole square. So again, if you look at f dash x, that will be 9 minus 12x plus 3. If this is equal to 0, this would mean that 9 upon 12 is equal to x plus 3. So x will be equal to 3 by 4 minus 3, which will be negative. That is wrong because x is belonging to 4 by 5. तो मेरा बाउंड्री 2 पे भी कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं आया, बाउंड्री 3 पे भी कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं आया. ठीक है, सो अब मैं मेरी कितनी बाउंड्रीज बची? 4. देयर आर 5 बाउंड्रीज इन टोटल, सो आई हैव कवर्ड 3 बाउंड्रीज. सो अभी मेरे को सिर्फ बाउंड्री 1 पे ही एक कैंडिडेट मिला है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट अदर 2 बाउंड्रीज. Now this is my boundary 4, and if you look at the definition, this was my boundary 4, minus x plus 2y equals to 2. So minus x plus 2y equals to 2 was the condition, or y is equal to x plus 2 upon 2, or y is equal to x upon 2 plus 1. और ये जो मेरा x था इस बाउंड्री पे, x का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है, आप नोटिस करिए. सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक है, तो अब अगर मैं अपने फंक्शन की बात करूं तो my function should be taking this particular form. So my function, you can see this is my function now. So my function, which was a function of two variables x and y, which was 9x plus 8y minus 6x plus y का whole square. This was my function. Okay, so my function अब is now a function of x only because y को हम replace करने वाले हैं. So which is 9x plus 8y minus 6x plus y.
So what is my function of x now? 9x, okay. Then plus 8x by 2 was 4x plus 8 minus 6, 3x by 2. So 3x plus 2 by 2 का होल स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन बन गया, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज 13x एंड प्लस 8 माइनस 6/4, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि अब एफ डैश एक्स जीरो, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं पहले, 13 माइनस 3/2 इंटू 2, 3x by plus 2 into 3. So if I want my f dash x to be 0, so let us calculate. So if you want your f dash x to be 0, this means that, so 13 equals to 9 3x plus 2. And this would mean that 13 upon 9 is equal to 3x plus 2. So 13 upon 9 minus 2 is equal to 3x. So minus 5 upon 9 equals to 3x. यहाँ से भी x नेगेटिव आएगा, और मेरा x का डोमेन क्या है? मेरा x का डोमेन था 0 to 4, तो यानी कि मुझे बाउंड्री 4 पे भी कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मेरी बची बाउंड्री 5, विच इज नथिंग बट द y एक्सिस वेयर द वैल्यू ऑफ x विल बी गोइंग फ्रॉम 0 to 1, okay. So that is our last challenge to do now. See, it's not very difficult, you just have to draw the domain, and that is why topology is very important. Topology का मतलब होता है आपको डोमेन को ड्रॉ करना है, आपको उसकी इंटीरियर पॉइंट्स, उसकी बाउंड्री नजर आनी चाहिए. If you are able to geometrically visualize things, you will not, make errors. So let us see on boundary 5. So this is my boundary 5. So मेरी बाउंड्री 5 पे क्या हुआ कि x का वैल्यू 0 हो गया, और जो y है वो 0 से 1 के बीच में. यू कैन सी दिस एज द बाउंड्री 5, ये 1 है और ये 0 है, और x का वैल्यू 0 है. तो जो मेरा एफ एक्स वाई था, अगेन इट वाज 9x plus 8y minus 6x plus y whole square. So this becomes a function of y now, because x is turning out to be 0. So minus 8 minus 6 y square. So let us calculate f dash y for stationary values. 8 minus 12y. So add y is equal to 8 by 12, which is 2 by 3. If you notice that the second derivative is equal to minus 12, which is negative. So we have a maximum value again. Okay. So the maximum value will be f0 2 by 3, which is 8 into 2 by 3 minus 6 into 4 by 9. So 3 2 the 3 3 the 16 by 3 minus 8 by 3. So that has to be 8 by 3. तो आप नोटिस करिए, आपने पहली मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी बाउंड्री 1 पे, जो थी 27 by 8. दूसरी वैल्यू निकाली आपने 8 by 3. In any case, 27 by 8 is more than 8 by 3. 8 by 3 is less than 3. 27 by 8 is greater than 3. So the maxima is actually attained on boundary 1. Okay. So this is a very wonderful application of extreme value theorem. To apply extreme value theorem, please remember one thing. In fact, two things: that the function has to be continuous and the domain has to be closed and bounded. Secondly, you should know how to draw the diagram of the domain. Generally, it is going to be a closed circle or a square or a combination of various lines. For example, in this particular case, very beautiful example. Then you look at the interior points. If you get interior points, calculate the values over there. Then you look at the boundaries, solve for boundaries, look at what you're getting maxima or minima, and then compare the values at the interior points and the boundary points. And that is how you calculate maxima and minima of a function of several variables using extreme value theorem for a continuous function on a closed and bounded domain. Thank you very much. See you in the next class.